Good evening, Dr. Nitin Shishodia live. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Happy weekend. Today in the Saturday night, evening, it's more of night. We're starting with a special session on isolation with a lot of requests for the rubber dam. We'll be doing a basic session on isolation, specifically focused on rubber dam, use of rubber dam. Use of rubber dam in dental practice. Are you with me, guys? I want to see. Can you see the slides? Okay, great. So, guys, as we all know, now rubber dam has to be used somehow. If you don't know, haven't used, but I'll be explaining in few slides in which it will be you will get familiar with use of rubber dam. Especially, I'm more focused who haven't used a rubber dam or basically they have just seen and some faint knowledge they have regarding the use of rubber dam. We'll be focusing on that. Basics from the components to the steps. So it is the hot topic of the present situation, as we all know why the use of rubber dam is utmost important, as most of the cases in our clinics will come for a restoration or a root canal treatment, and we don't want any spillage from the saliva in the form of aerosols. So this proper isolation technique will help you to reduce the viral load, as the saliva isolation will be protected. So guys, I welcome you all for this evening session, and I'm happy enough to see you all active on Saturday evening to learn, to understand, to see the topic. So before starting the topic, there were few queries regarding how to practice in COVID-19 scenario. So I did few sessions in which few things I added, and especially there were queries regarding, for example, you don't have your private clinic, so you are going for a job or a hospital. So how to practice there? So first and foremost, I'll tell you wherever you are practicing, you have to ask your employer about the specifications which are needed first of all. So you can manage on your part by taking few precautions, but few equipments which are needed have to be ordered, like a PPE kit, which PPE kit basically is a your protection towards the other aerosols which may occur during the procedure, and basically covering you fully for your protection, along with followed by, as you do the successive patients, you need to sanitize your PPE kit, then start with other procedures. So I'll just add few points. For example, you're practicing in an area where you are employed, or in a hospital, or in a place where the equipments are not much available, but few precautions if you take, it will be good enough. So basic thing, as we all know regarding the history part and basic management, because disposables would be available, so you will have head caps and all, at least gloves, masks and all. So all these precautions which I have told you, you have to take care after the proper history. It's very important, when the patient comes now, before letting him to sit on the chair, just do a good gargle with what? With chlorhexidine. 0.5, 0.2, whatever it is available, do a good chlorhexidine gargle. So what chlorhexidine will do? It will reduce the viral load, or I'll say it will eliminate. So a lot of studies were done many years back, more than 10 to 15 years back, with chlorhexidine usage. When we used chlorhexidine gargle for 0.002%, also the virus was eliminated. The first and foremost, before asking the patient to sit on the chair, just gargle, let him gargle, maybe on the wash basin or the washroom. Okay? He has to gargle for at least 1 to 2 minutes with chlorhexidine followed by povidone iodine. Why I'm telling 2 times? Because it will help you to eliminate even the traces of viruses. Or not only viruses, we are focusing on other bacteria, fungi also. So this is very important. ये कराने के बाद
then you can ask the patient to sit. Or if you add one more procedure, if he gargles through his throat also, because the virus which is now, which has an outbreak, or most of the bacteria are in the throat, तो थ्रोट का भी गार्गल होगा तो वायरस लोड और ज्यादा कम हो जाएगा. तो these are the ways in which aerosols, if are generated also, will have minimal viral load, because you are eliminating the microbes within the oral cavity through these rinses. Then you can go for a checkup and try the patient is not spitting, because जब वो spit करेगा आपके spittoon में, a lot of splattering will be there. तो उसके लिए you can cover the spittoon, or few people are advising to eliminate the spittoon only. And you can use that special suction, that cup suction which I showed you, which will help the patient to spit directly, and that negative pressure which is there in the suction will eliminate any splattering. So there's few things you can add. And finally, obviously during the procedure you have to use rubber dam to prevent the aerosol generation. So our main motive is to reduce the aerosol generation as much as possible, and the aerosols which will be generated, which cannot be avoided, can be helped with the use of high vacuum suction, very important, or if you are planning for external suction, but at least high vacuum suction. High vacuum suction का एक criteria होता है कि it sucks about 300 liters per minute. ठीक है, तो आप जब भी सोचेंगे हाई वैक्यूम सक्शन के बारे में, जस्ट फॉलो दिस क्राइटेरिया. And finally, as you are reducing the viral load with good rinsing of the mouth with chlorhexidine and povidone iodine, so what will happen? The aerosols, the viral load will be almost negligible, and if it occurs, your high vacuum suction or the other precautions which you are taking for the management of the air, using of a HEPA filter or a fumigator, whatever you feel like, so this will reduce the further aerosol which is present in the operatory air. So ये precautions you can take, and followed by, I'll always say कि you also take care of the things which you're using, like the gloves which I've used, which would have been contaminated with I'll say saliva. You need to wash your hands after use. That is with gloves you have worn. You have to wash your hands, so that when you remove your gloves and all, the any contamination won't spread, because you have already washed. तो एक बार आप gloves उतार भी दोगे और आपका assistant उस glove से maybe आपके instruments clean भी करेगा, तो it won't spread. So these small things you can add. And so these you can things. And one more add-on I want to tell you, you can add a solution in dental unit water line. That is, जो water bottle आप use करते हो, you can add few solutions of quaternary ammonium compound, or I sometimes use chlorhexidine, but it is a very low concentration. And in the meantime, you don't have anything, you can just use betadine also. But after that, always remember you need to spray your aerator, because जब भी जो भी water आपके aerators के through जा रहा है, the aerators have to be cleaned very finely. So these are the few things which normally you can follow anywhere you are practicing. Very simple way to reduce the I'll say bacterial, viral, fungal, any load which is there in the oral cavity. तो अपना सारा प्रोटेक्शन एक तो यही है कि, क्योंकि if the patient is affected with COVID also, if you reduce this load, so the chances of spread will be less. And I want to add you guys, in Germany, even in the lockdown, the dentists are working, because they have a complete knowledge how the virus acts and how the spread is there through the aerosols, which is very minimal if we follow all the precautions. So guys, if they can practice even in the breakdown, now we can also start a practice with following few protocols which I have mentioned. Is it fine, guys? If you follow these simple protocols, would it be easy for you to start your practice? सिंपल सा फंडा है, अच्छा गार्गल रिंस करा, अच्छा हाई वैक्यूम सेक्शन लिया, स्पिटून में जितना हो सके अवॉइड करना स्पिटिंग का, और साथ में रबर डैम यूज करा, और कोई भी पोर्टेबल, अगर आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, यू कैन यूज अ नेगेटिव आयन जनरेटर और HEPA फिल्टर, और वन एड ऑन ऑफ आपका जो वाटर यूनिट है जिससे पानी आएगा, उसमें आप यू कैन ऐड सम मेडिकेमेंट व्हिच आई एम टेलिंग, इंटरमीडिएट अमोनियम कंपाउंड्स, और एटलीस्ट if nothing is available, you can add betadine. Is it fine, guys? So the doubts which you all had, is it fine to follow in your basic practice?
So starting, should I start? I just want yes in the comment box so that I can start with the today's topic. These were the doubts which were there ki if we are practicing somewhere else, how we can follow. Obviously you can have your gowns and all which you can buy on yourself, and obviously wherever you are practicing, these small things will be available. So our main motive is just to reduce the, I'll say, viral load, which is maximally reduced by the rinses which we are doing. And as a lot of people are practicing all over the in different parts of countries also, by following these simple protocols, they are happy enough. So guys, you guys can also practice by following few precautions, and also look onto the slides which I've uh, done few sessions before. Now, as we were talking about the use of rubber dam, तो आइसोलेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब हमने सारे प्रिकॉशंस तो ले लिए, बट साथ में इफ वी आर एबल टू डैम इट, डैम बोले तो वी आर एबल टू क्लोज दिस रबर डैम, इट विल बी मोर इजी. सो starting, what you expect, what you should expect from the session is mainly the benefits and caretakings which you need to take care when you are doing a rubber dam, because especially for those who are not used to of using rubber dam, or you will be starting in their practice, few benefits I'll tell, because whenever you know benefits, किसी भी चीज का आपको फायदा पता हो, तो आप उसको यूज करने में आपको ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा, यू विल बी मोर इजीली एबल टू अप्लाई इन योर प्रैक्टिस. Because anything which is giving you a lot of benefits, not only in terms of, I'll say, infection control, but other things also which you will love when you start using, and along with small caretaking which you need to do when you are using a rubber dam, along with components and all steps and techniques. Okay, I want high energy today, so that the topic which is more of clinical, I'll make it more of practical in this session. So history बोले तो history, guys, rubber dam is not a new thing. It was started, मतलब people started working on using these isolation techniques in 1830s. In 1880s में तो start भी होने लग गया था with different components. बहुत सारी discovery हुई, बहुत सारी serendipity होके finally अब हमारे पास एक simple version आ गया. So it is very old. So it's, I think, these things are so old, and now we are starting to the practice. Now you can think things have been I'll say reported or used since so long, and now we are thinking to apply into our practice. See, so first of all, always I try to help discuss the benefits, because a lot of benefits other than the basic isolation you will get, and by seeing these benefits you will be start loving to use the rubber dam from the day one in your practice. Okay guys, to see the dry and clean operative field which will happen. Remember, you're doing a root canal or a obturation or a good composite or whatever, any procedure, when the it is exposed, you can see the gums, you can see the cheek, tongue coming all around. And now after using this rubber dam technique, by following the various steps which I'll be telling you, how beautifully you can perform the procedures. Okay, very good. Accessibility and visibility, yeah. Because when you place the clamp in the distal most tooth, the accessibility for the other teeth would be very good, and visibility would be better because all the tissues are retracted. Are you with me, guys? So you can see the benefits: dry, clean, accessibility, visibility, very important. Ability to restore the tooth, especially the technique-sensitive procedures like bonding a Emax crown or doing a technique-sensitive procedure with composite. We need a good moisture control, not only from the saliva but also the patient who is breathing. When the patient breathes, also a lot of moisture can come to the tooth surface or the surface which is getting restored, due to which the success or the longevity of the procedure may be hampered. So when you have a good isolation, even the most technique sensitive dental material also you can use with following this moisture control techniques. Protection to the patient, very important. You always remember when you used to work, when you are working with without rubber dam, a lot of cheek and tongues used to get lacerated, sometimes the lips also.
So when all the tissues are retracted, the patient's soft tissues are protected, and especially you can see in this diagram how beautifully the tongues and cheeks can be retracted. So the protection to the patient also is there. More efficient to the operator. Yeah, your working efficiency improves because now you are focusing on the tooth only rather than the other soft tissues which are always moving like the tongue. So your focus is also sometimes deviated. तो जब आपका फोकस टूथ पे रहेगा जो कि अच्छे से आइसोलेटेड है एंड यू नो नो contamination will be there and no soft tissue will interact, all the cheeks will be retracted, so it will be very easy and it will be very efficient. So your efficiency of doing the procedure both ways, the success, longevity, everything, and the ease of doing will be improved a lot. Retraction of the soft tissue. As I told, tongue and the chubby cheeks. You remember a patient in which large tongue used to be always covering the surfaces of the tooth, which we are doing either a normal filling procedure or a endo procedure. And a lot of retraction you need to do with your retractors, mirrors, and all. And also the gingiva which keeps on oozing out, or a lot of secretions of the bulky gingiva which used to hamper the restorative procedures. तो ये सारी चीजें ये retraction मिलेगा तो your treatment procedures would be very simple. Remember a class 5 restoration in which the gums are interrupting, and when you do a class 5, a lot of seepage is there and your treatment is not possible, or a bleeding from the gingival sulcus is there. So retraction of soft tissues will help you for the ease of doing all the restorative procedures. And very important, avoids patient tendency to repeatedly spitting. अब जैसे मैंने अभी बोला आपको कि हम अवॉइड करेंगे पेशेंट को स्पिटून में स्पिट करने के लिए क्योंकि स्प्लैटर्स आएंगे और वो स्प्लैटर्स डायरेक्टली विल हैव अ इफेक्ट on the air or the areas closer to that area. So वो जब हम avoid करेंगे तो जाहिर सी बात है you will use high vacuum suction and this tendency of patient to spit because you use using a dam. So tendency नहीं होगा तो एक benefit और add on है. Patient can take a nap. Yeah, patient are very comfortable. ठीक है. If you are comfortable in placing the dams and you are trying to tell the patient the advantages, and when the procedure starts the patient can rest. You don't remember when you used to do your procedures by using a bite block. जब हम bite block use करते हैं तो क्या होता है patient का एक position constant रहता है और patient nap में चले जाता है but still his soft tissues are active and all. But when you use a rubber dam a lot of benefit will be there that the patient can rest aram se. You don't have to be awake and just I'll say anxious of the treatments which are going on. You gave a good anesthesia, you isolate the tooth well, the patient can aram se take a nap. So very comfortable to the patients as they get used to it. Safety towards accidental file swallow. You remember guys, always when we do a root canal for any posterior tooth, we are always afraid of file getting swallowed because we have been told to tie a floss on a file, but we feel very lazy enough to tie a floss in every so many files which we are using. So guys, this will help you to eliminate the accidental swallow of the file which can lead to a medical emergency urgency and a lot of complications later on. So you are protected with that procedure also. And very important, especially those enthusiastic dentists who are documenting the cases or who want to take good nice pics with good isolation. So you can take same constant pictures with then rubber dam which will give you a nice documentation, photos, images. So these are the small benefits which I have told you, and a lot of other benefits also are there which you will start seeing when you practice. So guys, now do you feel you should use rubber dam or you want more benefits? So are the benefits worth enough to use the rubber dam? I want to see yes in the comment box. Do you feel a lot of advantage, the benefits I told of using a rubber dam would be worth learning the use of rubber dam? Is it worth, guys?
I can't see any energy in that comment box. If it's not work, then why should I extend my session, guys? I want to see yes. Yeah. Few yeses are coming. Only Dr. Malak want to apply, I guess. Yeah, Dr. Neeraj also. So now we know कि हाँ, lot of benefits are there of using a rubber dam, and we should use as a normal protocol or a routine protocol. ठीक है? And you can think that this outbreak has given you a chance to apply in every patient, because most of the time when we start with a rubber dam, because we are not comfortable and we think that our patient will also not be comfortable, so we don't use only. So now you know the importance, not only for you, for your ease of work, but also protection to the patient and the or the drafts which are there from the aerosols. So you know the importance, guys. So I think these points are strong enough to make you enthusiastic or motivated towards learning how to use rubber dam. So along with the benefits which I told you, I want to add few points which you need to take care when you start using rubber dams. Okay? See, as you are starting with rubber dams, okay? So these are the clamps, they are the components of rubber dam kit which we place on the tooth. So, क्योंकि oral cavity is open and he can swallow also, the tendency है in starting you will not be comfortable enough. Maybe you will not be comfortable enough for placing the clamp, especially upper 7 में. So it may slip sometimes. So you can take a precaution of slipping of clamp can occur. So these things you can take care by tying a floss in any of the techniques you want. A lot of techniques people say, but any of the techniques you can apply. Just our main motive is that at least 12 inches or more long thread should be there when you are placing the rubber dam, so that if this mishap occurs, that slipping of clamp occurs, so you can just pull it out with your thread. Very simple. So next is latex allergy. The rubber dam sheets which we are using are mostly available with latex. So some patient may have latex allergy, okay, but this also we can take care by using non-latex rubber dam sheets. And non-latex rubber dam sheets are also stiff enough. Elasticity is more, the tearing is less. So you can go with that. And second, one more thing is, especially you will have problems in placing rubber dam in partially erupted cases, or where no tooth structure, no crown structure is present to clamp. But guys, with the use of special clamps in few procedures, you can use that also. For example, in a partially erupted tooth, for example, this. If you raise a little bit of flap, okay, if you raise a little bit of flap and remove this soft tissue, it's 8 basically. You can think of any 6 or 7 which is partially erupted. You can get the cervical constriction, because the I'll say the prongs of the prongs, these are the prongs. I'll be telling you the details of the components of the rubber dam, so that the rubber dam के जो prongs है ना आपके अच्छे से अटक जाएं below the cervical section or in the cervical area of the tooth. You can just raise a little flaps. A lot of people I know who are practicing, especially those tooth which are partially erupted, or the tooth which are like a root stump or grossly decayed, where the you don't have any area to place the clamps. They do a lot of flap reflection. So you can also do, if you're dedicated to use a rubber dam in all of your cases. Also, we have special brinkers available, okay, for those tooth which have very small area of attaching the clamps. I'll show you the pictures of brinkers. There are special, I'll say, rubber dam clamps which can be, I'll say, attached to a very small tooth surface area, and gives a wonderful isolation. There are things which I'm loving, because I've started using these brinkers, and they give isolation in the tooth which earlier I was not able to isolate with normal rubber dam clamps. Okay, guys. And other things are damage to the by the clamp to the weak tooth structure. For example, जो tooth structure weak है, जहां आपको लगा कि आप क्लैंप लगाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर थिन फिलिंग से, फिर पोर्सलिन. कभी कभी क्या होता है, वी नीड टू गो फॉर अ रूट कैनाल एंड वी आर प्लेसिंग द क्राउन, तो द प्रोंग्स कैन बेसिकली एडहेयर. तो उसमें भी ऑप्शंस हैं. समटाइम्स वी हैव प्लास्टिक क्लैंप्स आल्सो. वी हैव फ्यू टेक्निक्स इन व्हिच वी कैन यूज
clampless rubber dam positioning also with the help of flosses. I'll say with the help of some compounds, impression compound or green stick compound से हम adhere कर सकते हैं. And also you can clamp on the posterior teeth, because now as you will be starting with the rubber dams, you will be more focusing on clamping on the tooth being treated. Okay, but guys, we can also clamp on the tooth which is being treated, a tooth distal to it. तो उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. ओके, कि फिलिंग का टूटने का डर या फिर पोर्सलेन, क्योंकि उस टूथ पे यू कैन जस्ट प्लेस योर, यू कैन आइसोलेट द टूथ विद द हेल्प ऑफ योर फ्लॉसिंग. तो आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफली अ पिक्चर, मतलब जहां जहां आपको दिक्कत आ सकती है और कहां कहां आप उसको टेक ओवर कर सकते हो. तो इफ these things are clear, then the steps when I'll be telling or the components I'll be telling, you will be able to correlate, guys. ठीक है. अब है मैल पोजिशन टूथ में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट यू कैन मॉडिफाई योर क्लैम्प्स, यू कैन मॉडिफाई द होल्स ऑफ द रबर डैम शीट विच विल बी पुटिंग. तो these things just keep in your mind, and when we will be discussing the steps, you can ask me regarding the queries, how will you manage such type of cases. We can manage आराम से. And especially asthmatic patients में also we can match, क्योंकि लेटेक्स से एलर्जी फॉर एग्जांपल होगी तो नॉन लेटेक्स ले लेंगे और पेशेंट को हम बोलेंगे इनहेलर लेके आएगा, तो इमरजेंसी में वी कैन आराम से रिमूव द डैम फ्रॉम द साइड एंड यू कैन यूज दैट अस्थमैटिक पंप आल्सो. तो अस्थमैटिक पेशेंट्स में थोड़ा शॉर्टकमिंग्स हो सकती है, बट वी कैन मैनेज. सो मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन मैनेज. नाउ इट्स सिंपल इनफ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, दांत इरप्टेड सही नहीं है या फिर रूट स्टम की तरह हो या फिर गॉसली डिकेड है या फिर थिन टूथ स्ट्रक्चर आ गया, देन आल्सो वी कैन modify our rubber dam techniques and we can manage. So now we know the benefits, we are happy to use, we are very enthusiastic now we have to use, because we have seen a lot of advantages, especially those who are practicing without the use of rubber dam. They now can see a lot of benefits are there, and also few things which they were thinking that problems will be there in terms of patient or in such type of tooth which are partially erupted or grossly decayed. Now we know we have special components and techniques which we can apply and almost make 100% use of rubber dam in our practice. So starting with the components, because when I'll be telling the steps, I'll be saying the names of the components. You should be aware enough, मतलब आपको clear होना चाहिए कि 4-5-6 components हैं, उनका क्या यूज है, उनको कैसे यूज करना है, वो आपको मैं इंडिविजुअली अभी बता दूंगा. जैसे फिर जब हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे या फिर कोई वीडियो डिस्कस करेंगे ऑफ प्लेसमेंट ऑफ अ रबर डैम, देन इट विल बी वेरी इजी. सो वेरी सिंपल, रबर डैम शीट्स. तो रबर डैम शीट्स एवरीबॉडी हैव सीन, बिकॉज सारे जो भी केसेस आप देखते हैं, वी कैन सी लॉट ऑफ शीट्स आर देयर. तो यूजली 6x6 इंचेस के साइज में अवेलेबल है, 5x5 इंचेस भी आती हैं. और आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए रबर डैम शीट्स की. फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू बाय रबर डैम शीट्स, ओके, शीट्स हैव टू बी बेस्ट, because initially when I was using rubber dam, the main I'll say problem which I was facing, that rubber dam sheets which were provided by the most of the kits were very weak enough and a lot of tearing were there. So it was a lot of, I'll say, demotivation of using the rubber dam, because a lot of sheet tearing will be there. So my learning would say, use good sheets, use rubber dam sheets. Good rubber dam sheets of latex and non-latex are available. I'll be telling you which I'm using, and I feel they're good enough. The earlier problems which I was facing of tearing of the sheets has almost got eradicated. तो थिन, मीडियम और हैवी 3 कंसिस्टेंसी, और कभी कभी एक्स्ट्रा हैवी में भी आती है. तो 3-4 कंसिस्टेंसीज आर देयर. आई विल से थिकनेसेस है बेसिकली. तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी उसकी ये कंसिस्टेंसी ऑफ थिन, मीडियम और हैवी बढ़ेगा. तो थिन विल बी ऑब्वियसली मोर इलास्टिक, थिक मीडियम विल बी अ लिटिल लेस, हैवी वुड बी मोर लेस इलास्टिक, एंड द एक्स्ट्रा हैवी वुड बी वेरी लेस इलास्टिक. तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी और उसकी इलास्टिसिटी कम होगी जैसे जैसे आप उसका ये आप थिकनेस बढ़ाओगे विद यूजिंग अ थिन, मीडियम एंड हैवी. ठीक है गाइस. तो शीट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आ गया हमें कि किस किस साइजेस की आती है. 6x6 कॉमनली अवेलेबल, 5x5 भी आती है कहीं कहीं. उसकी कंसिस्टेंसी पता लगी, थिन, मीडियम, हैवी. मोस्ट कॉमनली वी यूज मीडियम. आप हैवी भी ले सकते हो,
in some cases in which you feel lot of tearing is occurring, then you can use heavy also. But हाँ, medium of good company रबर डैम शीट्स अगर लोगे इट वर्क्स गुड. तो ऑन एन एवरेज सिर्फ एक पैकेट लिया आपने तो मीडियम ले लो, बहुत सारे पैकेट्स ले रहे हो तो एक एड ऑन हेवी ले सकते हैं. ठीक है. एंड लेटेक्स नॉन लेटेक्स दोनों अवेलेबल है. लेटेक्स इजीली अवेलेबल है, तो व्हाटएवर इट्स इज अकॉर्डिंग टू योर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर यू कैन आस्क फ्रॉम देम. ठीक है. सो देयर आर द शीट्स comes in different colors, or you can see Nictone, one of the best company, and I'll say you can add few sheets of other companies also. So Nictone is one of the good company which you can use. The elasticity is pretty good and now easily available also. And these are the different colors and the sizes as I told. So sheets के बारे में I think clarity is there. Now moving on to the second component, it is the rubber dam punch and template. तो basically punch and template कैसे होता है? You can see a template. Now as you start with your rubber dam practice, so for you it will be very easy to start to punch on a rubber dam sheet according to the, this is a template basically. ठीक है. इस टेम्पलेट का क्या फायदा होता है, इससे आपको पता चलता है which tooth number you are using, you can punch in that area. For example, if you follow the system from the first quadrant 1 to 8 it is there. For the pedo patients it is also there 1 to 5. ठीक है. 6 भी दे रखा है. तो you can just keep the sheet on it, the rubber dam sheet, and mark on the tooth which you are planning to place the rubber dam. It can be a single tooth like upper 7 or multiple tooth. Usually क्या होता है, when you get used to of placing the rubber dams, you will be happy enough to place the rubber dam clamp on a distal tooth, which for example you want to start with 6. You will put a dam sheet on 7 and you will isolate 2 and more teeth. That will come with practice. Initially I'll say just start with single tooth. So for example you're starting with a single tooth, just mark a dot with a pen or any marker by placing the rubber dam sheet over this template, and then you can punch. ठीक है guys. तो this is the punch. तो पंच क्या होता है, उसमें एक रोटेटिंग रिंग होता है, एक ये पंच होल जैसे जो भी एक ये टिप होता है जिसके बीच में आप रबर डैम शीट को रखेंगे एंड यू विल प्रेस फ्रॉम हेयर, तो इट विल पंच एग्जैक्टली ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल विच इज देयर. तो डिपेंडिंग अपॉन द टूथ विच यू वांट टू आइसोलेट, फॉर एग्जांपल लोअर एंटीरियर्स के लिए ये है लोअर, आई से लोअर इंसाइजर्स. अपर इंसाइजर्स थोड़े वाइडर होते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हो आप. फिर उसके बाद प्रीमोलर्स या कैनाइन्स के लिए आप 3rd नंबर वाला यूज कर सकते हो. 4 नंबर वाला इन सम लार्जर प्रीमोलर्स और स्मॉलर मोलर्स यूज कर सकते हो. इन टर्म्स ऑफ बिग मोलर्स स्पेशली लोअर 6 हो गया जो काफी वाइडर होता है, या अपर 6 जो काफी वाइडर होता है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. तो इट्स वेरी सिंपल. हाँ, it is very simple to decide for which tooth you want to hold depending upon the mesodistal dimension of the tooth you are isolating. Mesodistal and for maxillary molars, buccolingual also. So it's very simple. तो ये क्या होता है, ये जो रिंग होता है रोटेटिंग होता है, तो आप शीट को जस्ट इसके अंदर रखोगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द टूथ, फॉर एग्जांपल मल्टीपल टूथ का आइसोलेशन कर रहे हो तो you may have to use different holes. सिंगल टूथ का आइसोलेशन कर रहे हो तो यूज दी मोलर्स कर रहे हो तो this or the 4th one you can use. So it's a very simple funda. You just need to press from here and you just need to put your rubber dam sheet, और होल का करना है जहां आपने टेम्पलेट पे मार्किंग लगाया था, तो टेम्पलेट के ऊपर आपने रबर डैम शीट रखी. वेरी सिंपल. You just mark a hole which tooth you are isolating. If single tooth, just mark single. If multiple tooth, mark multiple. तो अब आपको सिंपल वे में पता चल गया है, और आप जब रबर डैम किट लेंगे उसमें आपको गाइडलाइंस में लिखा होगा कौन सा टूथ के लिए कौन सा होल करना है. और सिंपली आई हैव टोल्ड यू लोअर इंसाइजर्स, अपर इंसाइजर्स, canines and premolars, larger diameter premolars or smaller diameter molars, and especially larger molars like first and maxillary and first mandibular molar. तो आपको पता चल गया कौन से होल से क्या करना है. Just put the sheet and press it in one go. Press it hardly in one go, very important, because when you press hardly in one go, a hole of similar dimensions will occur. If you won't press hard way, what will happen? The hole won't be proper, तो शीट में lacerations आने के चांसेस रहेंगे. तो that's why जैसे आप पंचिंग मशीन यूज करते हैं, you punch in a one go,
so that one go में sheet exactly उस part में punch हो जाए. So you should go in a one go. That is the tips and tricks which I'll be telling you when we'll be discussing on the steps. So I think this component is clear. So this is a photo representing all the teeth. You can see the lower incisors. You can see the upper incisors, premolars and canine, and the molars or larger premolars and the larger molars. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. तो रबर डैप एक कंपोनेंट आपको पता चल गया. शीट्स, तो कौन सा शीट लेना है ये भी पता चल गया. अच्छी क्वालिटी का निकटोन हो या फिर अदर कंपनीज आल्सो आई टेल. और टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, सिंपल एक मार्क करके, और पंच को कैसे यूज करना है, वेरी सिंपल. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन कोर ऑफ द रबर डैम किट. तो कोर में मेन क्या आता है, क्लैम्प्स, बिकॉज दिस क्लैम्प्स आर द वंस व्हिच विल हेल्प योर डैम टू रिटेन, स्पेशली द डिस्टल टूथ में जो आप क्लैम्प लगाओगे. तो इसके बारे में आई वांट यू गाइस टू बी विजिलेंट इनफ एंड टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हिच क्लैम्प्स टू यूज. तो ये दो कैटेगरीज में आते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक विंग्ड होते हैं, विंगलेस होते हैं. आई टेल यू इन द फोटोज इमेजेस ऑफ द क्लैम्प्स. और बहुत सारे मेटालिक होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी आते थे, बट यू यूज मेटालिक ओनली. मोस्ट ऑफ देम स्टेनलेस स्टील या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ ब्लैक कलर्स आर आल्सो अवेलेबल. तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, एंकर करेंगे डैम को टू द टूथ पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिट्रैक्ट करेंगे जिंजाइवल में. यू विल सी नाउ. सी, तो वेरी सिंपल, यू कैन सी अ रबर डैम clamp. See, you can see it is a very it is a smaller version and this is a bigger version. तो बेसिकली ये विंगलेस क्लैंप है. तो ये जो विंग्स होते हैं एक नॉर्मल क्लैंप्स में, जिसमें ये होंगे तो वो विंग क्लैंप होगा, और जिसमें ये नहीं होंगे तो विंगलेस क्लैंप होंगे. तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा रिट्रैक्शन चाहिए, कौन सा टूथ आप यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल जब आप मैक्सिलरी 8 या अपर या मैंडिबुलर 8 में कर रहे हो तो ये कभी कभी चीक्स पे अड़ता है. तो आई फील दिस इज वेरी इजी. इन सम केसेस वी डोंट नीड दैट वाइडर रिट्रैक्शन. तो दिस इज वेरी सिंपल टू यूज. तो आपकी किट में जो भी आप किट लोगे, चाहे जीडीसी की, चाहे कोल्टीन की, चाहे अदर कंपनीज विच आर अवेलेबल, तो मोस्ट ऑफ द किट्स में यू विल हैव दिस विंग्ड वाला क्लैम्प्स. ओके, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये बो है. बो को क्या याद रखना है आपको, बो डिस्टल पार्ट में होगा. जब आप इस क्लैम्प को लगाओगे, दिस ब्लो शुड लाई ऑन द डिस्टल पार्ट. फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग इन द मैंडिबुलर मोलर, तो यू विल जस्ट अप्लाई सिमिलर वे. जब ये मैंडिबल में कहोगे तो मैक्सिला में करोगे तो उल्टा कर दोगे, और ये डिस्टल ही आना चाहिए, बस ये याद रखना है आपको. तो इन रूटीन केसेस यू पुट इट डिस्टली, बट इन फ्यू केसेस यू कैन पुट मीजली. आई विल टेलिंग यू. एंड दिस इज द विंग्ड एंड विंगलेस. तो इसमें क्या क्या याद रखना है, एक बो है, दो जॉज हैं, होल्स हैं to put the clamp forceps, say rubber dam forceps, I'll tell you. And these are the 4 prongs. These 4 prongs are very important because these 4 prongs will be touching on the buccal and the lingual surfaces and will be stuck or anchored. Basically anchored हो जाएंगे टूथ पे, और वो clamp जिसकी वजह से शीट भी आपकी अडहेर रहेगी. तो देखा आपने दोनों में देर आर 4 prongs, देर आर होल्स. ठीक है, इन विंगलेस क्योंकि वो बड़ा होता है तो होल्स डिस्टली भी है, मीजली भी है, एंड इसमें विंग्स नहीं है. ठीक है, दोनों को कैसे यूज करना है, स्टेप्स इन द स्टेप्स आई विल टेल यू. तो यू कैन सी फ्यू क्लैम्प्स, यू कैन सी द बो, यू कैन सी द विंग्स, यू कैन सी द होल, एंड मोस्ट ऑफ द क्लैम्प्स विल बी ऑफ दिस शेप. जो ऐसे डब्ल्यू शेप्ड होंगे ना, यू कैन सी द डब्ल्यू शेप, वो बेसिकली एंटीरियर्स के लिए हैं. तो आई विल शो यू अदर पिक्चर आल्सो. यू कैन सी दिस, यू कैन सी द विंगलेस पार्ट, these are the wings. ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर हैं, और कैसे आप डिसाइड करोगे कौन से टूथ के लिए कौन सा क्लैप यूज करना है. तो जो आप किट लोगे उसमें सारा गाइडलाइंस में लिखा होगा, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग, यू विल हैव अ गुड आइडिया कि कौन से टूथ में, आपको इतना अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन से टूथ में कौन सा क्लैम्प यूज करना है. तो आपको नंबर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है. तो उनके बहुत सारे नंबरिंग सिस्टम है डिपेंडिंग अपॉन द किट यू आर यूजिंग. lot of numbers are there. You don't need to memorize the numbers, guys. बहुत सिंपल है.
जैसे आपके टूथ का डायमेंशन होगा उसके हिसाब से आप आराम से आइडेंटिफाई करेंगे। बस एंटीयर्स के थोड़े अलग होंगे, जिनके ये जॉज थोड़े छोटे होंगे क्योंकि टूथ का साइज छोटा होता है, स्पेशली जैसे लोअर एंटीरियर्स या फिर अपर एंटीरियर्स के लिए ये हैं। और ये विंग ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब आप एंटीरियर में यूज करते हो, यू नीड लॉट ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ द शीट, जैसे ही आप टूथ पे फोकस कर सके हो, क्योंकि जैसे ही आप क्लैंप लगाओगे वो शीट जो होगी वो पूरे क्लैंप के ऑल अराउंड अटक जाएगी। आई विल शो यू इन द डेमोस, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट numbers and companies will have, so don't need to memorize, okay, just need to have an idea of the shapes, that's it। कि कोई वाइडर है, कोई स्मॉल है, जैसे लार्जर फॉर एग्जांपल लोअर मोलर जो कि मीजोडिस्टली बहुत वाइड होते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। स्मॉलर लोअर मोलर्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव होगा। दिस विल बी इजीली यूज्ड इन स्पेशली अपर मोलर, जिसमें दे आर मोर ऑफ द, आई विल से the buccolingual dimensions are much wider, especially in the maxillary first molar। तो according to the dimensions you will be familiar enough कि कौन से टूथ में कौन सा यूज करने का है। और वैसे भी जब आप रबर डैम प्लेस करेंगे, you will first do a trial of the clamp to see कि which clamp is fitting, तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप रूटीनली हफ्ता 10 दिन में करने लग जाएंगे, you will be strong enough, तो आप अपने हिसाब से आप अपने आप क्लैंप को उठाएंगे, you will be very easily able to identify which clamp to be used, ठीक है। and this is the Brinker, okay, just remember the name and just focus on the prongs which are there, prongs and jaws which are very small। so especially in when you are doing a deep class 5 or a case in which a lot of less tooth structure is there, you need to retract the gums also, subgingival तक isolation करना है, तो these are very effective। स्पेशली कोई टूथ है जिसकी कटिंग हो रखी है, डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल, तो कोई भी I'll say clamp won't fit, तो these are very useful। B4 is the very most common। तो आप जब प्लान कर रहे हो ब्रिंकर्स लेने का और पूरी किट नहीं लेना चाहते क्योंकि पूरी किट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, यू कैन जस्ट ऐड few B4 in your clamp kit, बिकॉज ये आपके नॉर्मल किट्स में अवेलेबल नहीं होगा। उसमें कुछ विंग्ड क्लैम्प्स ही होंगे लाइक दिस, एक किट में बेसिकली ये क्लैम्प्स आएंगे, तो विंगलेस आपको शायद अलग ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो मेनली द आर्मेंटेरियम व्हिच यू नीड टू ऐड इज टेक अ बेसिक किट followed by different numbers I can tell you or shapes I can tell you which you can add in your inventory with time, that's it। तो क्लैम्प्स की आपके पास बिग इन्वेंटरी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे डिफरेंट डिफरेंट टूथ के शेप्स और साइज को आप एकोमोडेट कर पाए, और आपके पास जब मल्टीपल क्लैम्प्स होंगे तो रिपीटेड पेशेंट्स में आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो these are the basics of clamps which I told you। Is it this clear till now? I want to see in the comment box, are you connecting with me? Yeah, Dr. Neeraj, I just saw your message। template is available in the kit, most of the kits it is available। अगर नहीं भी होती तो टेंशन नहीं है, आपको गूगल पे उसका टेम्पलेट मिल जाएगा, you can take it out and then also you can use। I just want to know, are you guys with me? Are you now are you familiar with the rubber dam punch, rubber dam template and rubber dam clamps? What are the wingless and some idea regarding the pillars? Are you finding a little are you getting a little known about the rubber dam components? Because you have to be familiar with the rubber dam components, all the components, so that you know what to use when। So are you feeling it is worth taking the session with different components, the details which I am putting, because I know it's a virtual session and you just need to have a good basics of the components। जैसे आप, I would tell you guys from tomorrow what you have to do with your these rubber dam kits if you have or you are planning to buy, so that you can have a great I'll say learning in terms of applying it clinically, ठीक है। अभी ये सेशन एंड होने दो, तो आई थिंक यू गाइज आर एंजॉयिंग द सेशन एंड लविंग द क्लैम्प्स, बिकॉज आई लव द विलेज एंड द ब्रिंकर्स। जब आप रबर डैम रूटीनली यूज करोगे, यू विल बी वेरी गुड फेमिलियर विद द डिफरेंट क्लैम्प्स एंड यू ऑलवेज विल वांट टू ऐड द इन्वेंटरी इन टर्म्स ऑफ रबर डैम क्लैम्प्स। तो अब एक और कॉम्पोनेंट यू शुड नो। अब आपको पता चल गया, आपने पंच करा, शीट ली पहले, उसको पंच करा टूथ साइज के हिसाब से, क्लैम्प भी सिलेक्ट कर लिया,
अब आपने क्लैम्प जब सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आप टूथ में चेक करोगे तो देयर इज अ फोर्सेप्स गाइस, देयर इज अ फोर्सेप्स कॉल्ड रबर डैम फोर्सेप्स या क्लैम्प की फोर्सेप्स, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो वो फोर्सेप्स अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की आएगी। यू कैन सी in this. It's a beak shape. There will be a mild, very little indentation on both the beaks. जैसे वो clamps पे अटक जाए while placing, and you can have this type beaks also. तो different companies अलग shapes की देगी। तो the motive is same. These beaks will be attaching, both the beaks will be attached to this holes which are there. तो बस डिफरेंस क्या है कि हम लोगों को ट्वीजर यूज करने की आदत है, कि जब हम ट्वीजर को प्रेस करते हैं नॉर्मल पीएमटी का ट्वीजर, तो उसके बीक्स बंद हो जाते हैं। तो स्टार्टर्स जो रबर डैम वाले हैं उनको ये दिक्कत होगी कि ये उल्टा है कॉन्सेप्ट है। स्पेशली ऑर्थो वालों को भी इजी रहेगी बिकॉज दे आर यूज्ड टू ऑफ यूजिंग सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हाइल यूजिंग सेपरेटर्स। तो इसमें क्या है, व्हेन यू विल प्रेस ना द बीक्स विल ओपन, तो थोड़ा सा उल्टा फंडा होगा। तो दिस इज द हैंडल, you will hold this. When you will press, the beaks will open, and when you will release, the beaks will be closed. And there is a lock. Always remember, this lock can be shifted anteriorly. जब उसको आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपका ये ट्वीजर की तरह बन जाएगा, सिर्फ उल्टा होगा कि जब आप इसको स्क्वीज करोगे, प्रेस करोगे तो आगे से ओपन हो जाएगा, जब आप रिलीज करोगे तो आगे से क्लोज हो जाएगा। और एक अच्छा एडवांटेज इस कंपोनेंट का है कि when you have attached your forceps tips to the clamp holes, you can just lock it, you can push it back and lock it. तो आपका हाथ अगर लूज भी हो जाए तो वो खुलेगा नहीं, because the lock will help it to stay open. तो आराम से you can place on the tooth. When I'll show you the video of the placing a rubber dam, you will understand in a better way. Just remember there is a handle, there is the which helps in locking, and there is other tips. तो टिप्स में लाइट ग्रूव्स होंगे, ज्यादा डीप ग्रूव्स नहीं होंगे। अगर ज्यादा डीप ग्रूव्स होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप क्लैम्प्स टूथ पे प्लेस करोगे, जब आप ये फोर्सेप्स निकाल रहे होंगे तो अटक जाएगा। तो ग्रूव्स शुड बी लाइट माइल्ड ग्रूव्स होने चाहिए। ग्रूव्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो अटक, जो आपके क्लैम्प्स के होल पे ना वो आराम से अटक जाएगा लाइट ग्रूव्स, तो इजिली आप उसको निकाल पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे। अगर ज्यादा डीप होंगे तो ग्रूव्स इन होल्स में अटक जाएंगे, तो आप रबर डैम निकालने में व्हेन यू हैव प्लेस्ड द forceps, place the clamp on the tooth with the help of forceps की डिफिकल्टी होगी, that I'll be telling in detail. Just remember कि जो forceps है आपके होल्स में एंगेज होके क्लैम्प्स को आपके टूथ पे प्लेस करने में हेल्प करेगी, and this is the thing which will be there. When you press, it opens up and you can lock it so that it doesn't close. ठीक है? I think this component is also very much clear. And the last and the main components में या फिर ऐसे मैक्रो components में आपका रबर डैम फ्रेम आएगा। तो जब आपने रबर डैम प्लेस कर दिया तो फाइनली यू विल पुट अ फ्रेम, और इन few techniques you can put the frame before also placing the clamps on the tooth. So commonly available, this plastic frame is commonly available with these notches will be there so that the sheet gets attached. This is also second plastic frame. It is a, I'll say, frame in which you can close. Here you can see it's a single unit frame. ठीक है, इसमें 2 पीस फ्रेम है, तो ये फ्रेम फोल्ड हो जाता है। इसका स्पेशली एंडोडोंट यूज आता है कि आपको फ्रेम बार बार निकालना ना पड़े एक्शन लेते हुए, तो आराम से आप इस फ्रेम को क्लोज कर सकते हो। There is a pulley over here, so when you close it, it rotates and you can use it as a half frame also, especially while taking x-rays. And this is the most common which I like is the metal frame. ठीक है, तो मेटल फ्रेम भी होगा, उसमें भी ऐसे नॉचेस होंगे which help you attach. तो ऐसे करके आपका you can see how nicely the rubber dam sheet can attach. So these are the basic components which you need to know. I think all are clear, starting from the rubber dam sheet, punch and template, clamps which are winged and wingless. Different numbers are there, you don't need to memorize, धीरे धीरे आपको used to हो जाएगा. But the brinkers which are pretty good in specific situations. The forceps which I told you, which helps the clamps to be placed on the tooth.
and the frames, different frames which are available, the single piece plastic and the metal, and I'll say foldable frames which are now fashionable. Now a lot of fashions have occurred of using this type of frames, especially because you can also aram se rotate it when taking a radiograph. This is the way it will be tied, and few other components which you need to have accessories, mainly the dental floss, because dental floss will be very helpful in multiple tooth isolation. In the videos you'll come to know. Petroleum jelly you can add, especially in those type of cases where the contacts are very tight and it is very difficult to put the rubber dam sheets into the proximal contact. So you can put the jelly. तो जेली कहाँ प्लेस करोगे आप? इनर सरफेस पे. और आई लाइक टू ऐड की जो रबर डैम शीट्स है ना, उसकी भी दो सरफेस होती हैं. एक ग्लॉसी सरफेस होती है, एक डल सरफेस होती है. जो ग्लॉसी सरफेस है वो टुवर्ड्स द टूथ होगी, जो डल सरफेस है वो टुवर्ड्स यू टुवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द डॉक्टर होगी, आउटवर्ड्स. ठीक है. तो पेट्रोलियम जेली आपको इन पार्ट पे लगाना है ऑफ द डैम सो दैट इट स्लिप्स इजीली. एंड यू कैन आल्सो पुट रबर डैम नैपकिंस इन फ्यू पेशेंट जिनमें सलाइवेशन बहुत ज्यादा है और ड्रूल करता है बार बार, और आपको पता है बहुत लंबे प्रोसीजर तक आपको रबर डैम लगाना है, तो यू कैन ऐड अ रबर डैम नैपकिन आल्सो. फ्यू कंपनीज गिव दिस रबर डैम. आई विल शो यू. यू शुड हैव वेजेस, यू शुड हैव सेपरेटर्स स्पेशली ऑर्थो वाले जो राउंड इलास्टिक्स की तरह होते हैं. That will help you a lot in multiple tooth isolation, and fine filling instruments which will be used in dam inversion. I'll be telling you what is dam inversion. So these are the rubber dam napkins some companies give. Otherwise you can make also these napkins. You just need to take a tissue, good quality tissue, and you can make a hole in between. तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप टिश्यू पे भी मॉडिफाई कर सकते हो. तो स्पेसिफिकली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आपको पता है कि आपको यूज करना है पेशेंट के कंफर्ट के लिए, यू कैन यूज दिस. ठीक है. दिस इज द फाइन इंस्ट्रूमेंट विच यू शुड हैव. फॉर एग्जांपल सी इफ व्हाइल आइसोलेटिंग द मल्टीपल टूथ्स द शीट विल कम इन दिस वे. नाउ फॉर अ गुड आइसोलेशन यू नीड टू इन्वर्ट. तो इन्वर्जन के लिए फ्लॉस तो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको, दैट यू विल सी इन द टेक्निक्स, बट दिस फाइन इंस्ट्रूमेंट विल आल्सो हेल्प. वो क्या करेगा? इसको इन्वर्ट करेगा. इन्वर्शन से ये फायदा होता है कि एक सील क्रिएट हो जाती है. जैसी रबर डैम शीट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है अंदर की तरफ चले जाता है, एक सील क्रिएट हो जाती है, तो आइसोलेशन बहुत अच्छा होता है. तो these are the few components you should be aware. So guys, today I want you all to get familiarized with the basic components. जैसे अभी एक पिक्चर बन जाए कि ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को यूज करना है, तो सारे कंपोनेंट्स की एक अच्छे से हमने आइडिया ले लिया, एक्सेसरीज का आइडिया ले लिया जो हमें यूज करना है, और कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें यूज करने हैं, जो टेक्निक के स्टेप्स हैं, वो आई विल बी डिस्कसिंग एंड वील बी डिस्कसिंग टुमारो, सो दैट अभी जो हमने एक बेसिक पार्ट डिस्कस करा है to get it into your brain. So tomorrow when we starting with the steps, which is the main part why you are listening to these sessions, will be discussing tomorrow by a quick revision also. So now learning would be very simple, and most probably I'll take session tomorrow if possible. Otherwise I might try to make it tomorrow, because today you are very nicely familiarized with all the components. So successively when I'll take session for the steps, you'll able to identify this. Abhi my toward to you all the patience is this. अगर आपके पास रबर डैम किट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से ले लो फिलहाल के लिए. अगर आप घर पे हो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी भी उससे बोलो रबर डैम किट चाहिए, क्योंकि आपको यूज करना ही है. अब जब मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, आपके पास रबर डैम किट ही नहीं, तो फिर फायदा नहीं है किसी भी चीज का लर्न करने का गाइस. Because if you are planning to buy later or not planning to buy, then your practice will be degraded along with you will forget. तो I want कि आज मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया आपको. अगर आपके पास रबर डैम किट नहीं है, कल तक आप रबर डैम किट ले आओ. तो I am happy enough to take sessions on Monday. So you can write in the comment box if you are planning to buy a rubber dam kit. Just buy a rubber dam kit till tomorrow or till afternoon, and then I'll take session on Monday evening. So at that time
all of you must have your dam kit and you can apply at least using this rubber dam kit on models. तो हर किसी के पास क्लास मॉडल होगा या फिर वो वाला मॉडल होगा जिसमें आपके टूथ होते हैं, आर्टिफिशियल टूथ होते हैं. मेरी एक से है कि आप अपने मॉडल्स को रेडी रखो. जैसे जो मैं सेशंस लूं, जो मैं स्टेशन वीडियो शो करूंगा, यू कैन यूज डायरेक्टली ऑन योर मॉडल्स. एक बार मॉडल्स पे आ गया तो पेशेंट पे अपना इजी होगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव ट्राइड 2 times on the models. So directly trying the you will be a little anxious. It's better to try on the models. तो अभी मेरा से है कि कोई भी आपका क्लोज है जिसके पास रबर डैम है उससे ले लो या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लो. और जब हम स्टेप बात करेंगे, you should apply these steps at your home or respective places wherever you are. ठीक है. सो वो जो वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस जो मैं ले रहा हूँ वो आप अप्लाई कर लो अभी के अभी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैं आपको सेशंस के थ्रू ले रहा हूं. अगर आप अभी ही अप्लाई करने लग जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. तो माय सेइंग इज दैट जस्ट गेट योर रबर डैम if possible. If you want a day or two, you have till I'll say Monday evening I'll take sessions on different steps. I'll put a video. That video will help you to see steps and I'll pause the video in between. जैसे आप लोग मेरे साथ वो रबर डैम को अप्लाई करो. ठीक है guys, is it fruitful if we do sessions in this way, or I'll just be saying and you will just be listening and while doing on the model on patient you will get stuck, then I'll be there. तो अभी मैं चाह रहा हूँ because I am investing my time and you are also investing your time in the sessions and you guys can take the rubber dam or you can borrow the rubber dam kit at least a session so that you can apply this technique. Because मैं अगर ये सेशंस ले रहा हूं और आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास किट ही नहीं है, तो फायदा नहीं है गाइस. हाँ तो ठीक है डॉक्टर सतीश, आई एग्री. वील प्लान नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे इवनिंग. टिल दैट अरेंज रबर डैम किट्स फ्रॉम योर फ्रेंड सप्लायर एनीवेयर. यू कैन गेट इट. कोई भी क्लोज पर्सन होगा, आपका सीनियर जूनियर कोई भी होगा, उससे रबर डैम किट ले लो, शीट्स ले लो और उसको देखना चालू करो. जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए एटलीस्ट उसको देखो. आप फोर्सेप्स को यूज करके देखो, आप सारे क्लैम्प्स को डिफरेंट मॉडल्स पे देखो, क्योंकि सबके पास मॉडल्स होंगे, कास्ट होगी, नहीं तो आप बोरो कर सकते हो. ठीक है, सारी चीज देखो. और एक एक्स्ट्रा चीज मैं बोलूंगा, उन मॉडल्स पे ना अगर प्रॉक्सिमल स्पेसेस होंगी, उन मॉडल्स पे अगर प्रॉक्सिमल स्पेसेस होंगी तो इजी रहेगा आपको फ्लॉस से यूज करना. तो आइडली टूथ वाली फील आ जाएगी. तो ट्राई हैविंग द मॉडल्स विद which are not attached, all the tooths are not attached, a little proximal there, or in models you can create it also. तो try to take models with proximal spaces. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंगल टूथ आइसोलेशन सीख जाओगे. मल्टीपल टूथ के लिए इजी ये रहेगा कि आप proximal spaces वाले लो जिसमें proximal contact हो और you can try the floss. तो how will come to know? Take a floss, put in the proximal spaces before my session, so it will be easy for apply. So guys, all the components revise करो, kit लो, मंडे तक सारे components को try करो. And Monday evening when I'll take the live session, all of you should have your kit. And when I'll be telling you, you can apply the same steps on your model. So that learning will help you to apply exactly on the next day to your patients. Okay, and I'll tell you single tooth isolation, multiple tooth isolation, and you can start with single tooth isolation at least for endo or I'll say start with your class also. तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा यूज करने का. कैन अरेंज गाइस, यू विल अरेंज, बिकॉज हमारे क्लिनिक्स के पास बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं या फिर आपके कलीग्स हैं और हम डॉक्टर्स हैं, कैन ट्रैवल. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे पा रहा, आप अपनी कार या किसी भी टू व्हीलर किसी में भी जाके आप उनसे ले सकते हो. तो वी हैव दैट फ्रीडम, वी कैन ट्रैवल एज वी आर डॉक्टर्स. तो जस्ट अरेंज योर किट्स. यू हैव 1.5, ठीक है, 2 nights, 1 day you have, and then weekends. I'll say 2 days because complete Sunday and complete Monday से lockdown open है, तो I guess you guys can arrange. So let's start the session on Monday evening, and I think you all will enjoy using the rubber dams firstly in the models, then on the patients, and within a month or I'll say within a week you will be smart enough to apply in all your patients. So guys, ready
for the session. Arrange your kits, and we'll be back Monday evening with our demos, which you will be doing at your home. So hands on हो जाएगा guys. इससे अच्छा क्या हो सकता है? So I think now we should say shut off to the session, and we'll see you day after tomorrow evening, same time. And just arrange if some difficulties are there, some doubts are there, you can put in the comment box. So see you guys. Dr. Njoy signing off, and thank you all of you for such a nice listener and a lot of comments I saw. So people are getting interested, and these benefits will motivate you to use this into the practice. Okay, till then, bye bye, take care. And if you feel this is advantage, it has helped you, and I want this basic steps to be, I'll say, spread it to all over the dentist or all the freshers or interns which we want to apply this practice. So guys, share this so that everybody knows the advantage and basic components. And next day, when we'll be doing the live demos, we'll a lot of people all together with a lot of doubts, and it will be a very active session. Till that, bye-bye, take care, good night, have a great weekend, and stay safe at your home. Bye-bye. And share the video, guys. Don't forget to share. Sharing is very important. I want it to spread to every part, not only India, every part of the world, so that people can take benefit of online sessions. Okay, bye-bye.